आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने से क्या सवाल किया गया और उन्होंने क्या जवाबात दिए, जरा सुनिए। Pakistan is in many ways China's closest security partner, and you talked about CPEC in your remarks as one of the focal points of cooperation. I just wondered if you might sketch out how you saw security cooperation with China progressing in the next decade. As I said in the speech, that we are not looking for camp politics. We had historically excellent regime in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. The best equipment that we have is the American equipment. We still have deep cooperation with the United States and our Western friends. A month back, the American Air Force was here for a huge exercise with our Air Force. So we have great cooperation with the West. सुनाएं जी, बकिया तरतीब से सारे शॉर्ट सुनवाएं। China, of course, is our neighbor, is a very important neighbor, and has helped us in many ways. Our military cooperation with China is growing because we are denied equipment from the West. Many of the equipment which were concluded have been cancelled. So what do we do? I'll just give you an example. We bought T-129 helicopters from Turkey. It's a very good machine, and the deal was signed. It's a defensive weapon. It's a gunship. But the engine was of American origin. So the Americans refused to give the third-party certification. So what do? Either we wait or go somewhere else. Either go to Russia or go to China. We will prefer to maintain a balance. Similarly, we were making some 8 submarines, and the Germans were supposed to give the engines and everything was done. And the last moment, when the submarine was ready, the Germans refused to give us the engines. France has done the same, of course, under the Indian pressure, because India is a big buyer. ये बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे हैं, दिफाई तौर पे हम उन पे इन्हिसार करते थे, लेकिन जब हमें बिल्कुल वो अपने दरवाजे बंद किए गए, दिफाई सौदे न सिर्फ हमारे साथ करने से इनकार कर दिया, बल्कि जर्मन से, तुर्की से, फ्रांस से जब हमारे तयशुदा सौदे, दिफाई सौदे, वो भी मनसूख करवाए गए, मनसूख हुए नहीं, मनसूख करवाए गए, कहीं इंडियन प्रेशर और कहीं अमेरिकन प्रेशर, क्योंकि जर्मन ने भी इनकार कर दिया फाइनल सौदा करने के बाद सबमरीन, फ्रांस ने भी इनकार कर दिया, और तुर्की से हम हेलीकॉप्टर ले रहे थे लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अमेरिकन मशीन थी। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने पूछा कि आप बताएं कि हम कहाँ जाएं, क्या हम रूस और चाइना की तरफ मत देखें, क्या हम अपनी दफाई ज़रूरत पूरी ना करें। तो ये सवाल हो रहा है। फिर अगला शॉट जो है वो ज़रा गौर से सुनिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये अब हमने तो पूरी कोशिश कर ली कि तवाज़ुन बरकरार रखें, लेकिन हमारे लिए दरवाजे बंद किए गए और हमारे बाकी दरवाजे हमारे लिए खुल गए। अगले में वो बता रहे हैं कि अब तवाज़ुन बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी पॉलिसियों पे गौर करें, अमेरिका को कह रहे हैं। सवाल अमेरिकी ने पूछा, उसी का जवाब उसी अंदाज में दे रहे हैं, और जहां हमें हथियार मिलेंगे हम अपने हथियार खरीदेंगे। सुनाइए जी। So what do? It is your responsibility to maintain the balance. If you are tilted towards one side outrightly, we'll find sources from where we can get weapons to save ourselves. So you need to carry out introspection whether your policy is right or not. We've been your allies for a very long time. We were part of SEATO, CENTO, Baghdad Pact. We supported you in Vietnam. We supported you in Afghanistan. We helped you dismantle the erstwhile Soviet Union. And the muck that you created, we are still trying to clean that. So we have paid a lot of cost. What are you doing about us? The question, I must ask you the question. Are you maintaining a balanced approach or not? तो वो कहते हैं हमने बड़ी कीमत अदा की है, अपनी कुर्बानी दी है। उसके बाद चाइना के साथ उन्होंने डिफेंड किया कि चाइना ने हमें किस किस तरीके से बेल आउट किया और हमारी मदद की और हमारे साथ ताउन कैसे बढ़ाया, और CPEC का दिफा किया आर्मी चीफ ने। सुनाइए जी। CPEC is a very important development. There was a problem in Pakistan. We had shortages of electricity, huge shortages. Nobody was coming forward because there was a lot of terrorism. So Chinese stepped forward, they took the risk and they built these plants.
but it doesn't mean that Pakistan is no go for the areas. If you feel that there's too much of Chinese influence in Pakistan, the only way you can counter is by bringing in the counter investment. Who stops you? We'll welcome any investment. Few days back, Barrick Gold has signed a deal in which they're going to explore a mine in Bullock's, a huge mine, copper mine, and Barrick Gold is a Canadian company. The Canadian ambassador is sitting here, so we will welcome investment and cooperation from the entire world. वो वाज़े तौर पे चौधरी साहब मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आएँ, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। कैनेडियन सफ़ीर बैठे हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कॉपर माइन में, तो आप भी तशरीफ़ लें बजाय इसके कि आप हमारी टांगें खींचें। चौधरी साहब नहीं, वो तो बात अभी ठीक है, लेकिन बात आगे बढ़ गई है। उसके बाद आपने बाकायदा यूक्रेन के इशू पर आपने रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका के कहने पर करारदाद के हक में वोट देने से इनकार किया। और आप अकेले नहीं थे, जैसे कि अमेरिकी ने भी कहा कि श्रीलंका, इंडिया, कई दूसरे ममालिक ने ऐसा किया। अब उन्होंने आपके ऊपर कांटा मार दिया है। हाँ जी, और वो समझते हैं कि ये सारा शाखसाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब रूस गए हैं तो उसका नतीजा है। अब आर्मी चीफ ने बातें वही सारी की हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं जी, और पूरे मुल्क का मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत सारे जो गलतफहमियाँ थी उनको दूर किया है। लेकिन असल बात यह है कि अब उन्होंने पाकिस्तान को कर लिया टारगेट, और आपको उन्होंने रूस और चीन और इस ब्लॉक के पल्ले में डाल दिया है आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़। तो ये एक गंभीर सूरत हाल पैदा होगी। अब साबिर शाकिर साहब, मेरे कुछ आपसे सवाल करने हैं। जी सर। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, साजिश, उसके ताने बाने, सारी चीज़ रिकॉर्ड पर आ चुकी है, लेकिन हुकूमती ज़राए ये समझते हैं कि बाज़ जगह से हुकूमत के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ कैंप को गैर ज़रूरी और गैर मामूली हलाशरी दी गई, जिसके नतीजे में वो पार्टियों को और लोटे जो हैं उनको भी वो पैसे दे के ले गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, और इत्तेहादिये भी जो हैं 4.25 साल इकट्ठे इनके साथ रहने के बाद अचानक उनको ख्याल आया कि वो उनको नए कैंप में जाना चाहिए, तो वो भाग गए। अब इसका आपके पास कोई अफेक्टिव 2+2 इंफॉर्मेशन है कि ये जो इनके खदशात हैं किस हद तक दुरुस्त है? चौधरी साहब इसका जवाब इंशाल्लाह देते हैं ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।